अगर आप लोगों ने लिवरपूल वर्सेस टॉटनम का मैच मेरे साथ देखा था एंड देन यू वुड नो दैट मैंने एक प्रण लिया था कि अगर रॉबर्टसन कोई भी गलती नहीं करेगा देन आई विल नॉट हैव एनी डेजर्ट till the West Ham match which is on Sunday. And I think we can come to that conclusion that it was not really or exactly anything wrong that Robertson did today. So whatever that was, so I will give it to Robertson that it was not a clear-cut error that he made today. So I'm very happy with him. I think he maintained the black line. He maintained the back line so well, which is why I'm going to go ahead with it and you are going to witness it and tell everyone that I'm really not going to eat any dessert till the West Ham game on Sunday. And remember, it's going to be Christmas bhai in like 2 days, so of course it's going to be very difficult to. मैं तो खा सकता हूँ. हाँ तुम खा सकते हो but you will not ना to help me. Come on. वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? I hope we're in good. You know what? That is the most important thing that matters. आज का मैच 3-6 like literally 3-6 एंड हुआ है. Now this is something that I think I expected and anticipated that ये वाला मैच पक्का हाई गोल स्कोरिंग मैच रहेगा, but did not really think कि 3-6 तक जाएगा. तो that is something very unbelievable. But first of all, we have to talk about the man of the hour, that is Mohamed Salah, and he has been the man of many hours. Like we are getting seriously very tired of talking about Mohamed Salah because I'm not he getting tired. is like हर एक मैच which game was the last game जो वो he did not have a goal or assist contribution I think Nottingham Forest एक मैच था जिसमें वो नहीं कर पाया था. और एक मैच था क्रिस्टल पैलेस तो नहीं था ना क्रिस्टल पैलेस था. I think so yeah. maybe. And so he has now moved into the top 4 Liverpool all-time leading goal scorers, like we are witnessing history with the best minutes to goal ratio, which is like a big thing to consider. मतलब सोचो we are witnessing history here. आगे आने वाले पता नहीं कितने सालों में when नए लोग देखने वाले हैं कि there is somebody called मोहम्मद साला जिसने हम लोग देखे हैं ये चीज़ live. I'm like so happy and blessed to have a player like मोहम्मद साला in the team. By the way, like वो लोग जैसे नहीं होते मतलब दादाजी लोग के हमारे टाइम में तो इनको देखे हुए थे खेले हुए. हम लोग बात करेंगे. हम लोग भी बात करेंगे. अपना टाइम भी आ गया है. साला भाई टेंशन ना लो, आपका लेगेसी हम बढ़ाएंगे आगे. आपके बारे में हम बातें क्या करेंगे एकदम. और इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी दैट मोहम्मद साला का जो आज असिस्ट रहा था टू सोबोस्लाई, दैट बिकम्स द 10th असिस्ट फॉर मोहम्मद साला. और ये जो असिस्ट है इससे क्या हुआ है दैट ही हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग इन विच ही हैज double figures in goals as well as assists. So like by Christmas, yeah, that's what I said, by Christmas. Like so good. How many times do we have to talk about the records that this man is breaking and making? I'm like so happy with it. Like I think Thierry Henry का एक सीजन था जहाँ पे he scored 20 goals and he had 20 assists. तो like in total ना. हाँ तो I think that Salah is aiming for that also कि वो एक रिकॉर्ड भी है जो वो ब्रेक कर सकता है. 11 assists उसके हो गए हैं and 15 goals उसके हो गए in Premier League we are talking about. So that's like crazy good. And in this like starting of the video, not the video but in the starting of my live stream I was talking about this thing that when we talk about Tottenham, why is it like this match would become very important for us to win? Because when it comes to Tottenham, their goal scorers, their forwards, they link up so well that if they get the ball, you should know that it's going to, be a goal. Like they're that good, they're that clinical, which is why I was a little bit scared because we do not have Konate in the back line to defend us. So, when it comes to counter attacks or anything, when it comes to any aerial duels, I think Gomez would not be able to win it. So, which is why we miss Konate being in that position. But लेकिन आज मतलब फॉर अ बिग पार्ट ऑफ द मैच जाके वो बीच में जो 10 मिनट हम लोगों का निकला है अगर उसको ना कंसीडर करें बट वो तो मतलब पूरा बैकलाइन ही सोच लिया था कि अब खेल के क्या फायदा. लाइक एवरीबॉडी स्टॉप्ड रनिंग कंप्लीटली. लाइक इट वाज तुम रॉबर्टसन ही ले लो, तुम वर्जिल ही ले लो. इवन वर्जिल वाज being very passive उस 10 मिनट के लिए. That is why even I was telling him that अरे
इस टाइम कैप्टन को उठ के आना पड़ेगा और दूसरों को लाइक एक टपली मारना पड़ेगा कि भाई जस्ट बी इन द गेम, वी हैव नॉट वन इट टिल नाउ, बिकॉज द कैप्टन कैन नॉट टेक इट लाइटली कि ठीक है यार आराम से खेलो, यू कांट डू दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो वहां थोड़ा डर लगा तो था ही. प्लस मतलब जो मैं कंटिन्यूएशन में बोलना चाहूंगा कि गोमेज वाज टास्क्ड विद द कोनाटे रोल टुडे, एंड लाइक फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द गेम ही डिड इट like very nicely, like kudos to Gomez there. Like I'm so happy seriously because these are the matches in which and we have needed his services so many times even earlier, that he comes on and really protects the team and fills that gap that any injured player has left, so this is something that I really appreciate about Gomez, that today he really stood up, because it's not easy when you think about the stats of Tottenham's forwards, be it Son, be it Solanke, be it Kulusevski, be it James Maddison. They have had so many goals between each other and assists, so which is why it would be very difficult for him, the pressure would be on him to not commit a mistake, and also on Robertson, because कितना hate मिल रहा है Robertson को, and listen, मैं नहीं बोल रही कोई और कर रहा है, हम खुद ही कर रहे हैं, because we want to see the team win and cannot afford to have more any errors in the game. Like आज के मैच के बाद भी like it is clear that we need to think about the left back position very seriously. लेकिन आज के मैच में specifically like he did not commit any सच मिस्टेक जो कि मतलब अकेला ही पूरा उसकी वजह से पूरा स्कोर लाइन ही बदल जाए. He did not have a very good game, I would say, but he did not commit a blunder per se. Not at all. No. I'm like happy with the backline, because there were many times जब वो लोग offside हो रहे थे, because the backline was being maintained very very well. So I'm quite happy with it. And there was a point in the game where I was like, भाई अगर मेरे को आज बताना हुआ who is going to be my best player, I think I would be totally confused, because there were so many contenders for it. Like be it McAllister, how many times has he broken their, what do you call that? Like when they were creating a chance, like in possession, he has dispossessed them, created a chance, and made a very good run with it. लेकिन अगर वो भी बोलने जाए तो उस वाले पोजीशन पे like Szoboszlai did the same thing. But Szoboszlai also had goals and assists today. Like Szoboszlai was finally also had a goal today. हाँ, Szoboszlai अगर वो बोलेंगे, McAllister had a goal because Szoboszlai was there. Yeah. He was there, like he had the first touch, and then it went to McAllister, and McAllister ने header मारा. जब से भाभी ने हाँ बोली है. कौन सी भाभी ने? Szoboszlai की बीवी जिससे शादी जिससे होने वाली है, उस टाइम के बाद से जो Szoboszlai में जेरार्ड की आत्मा जो घुसी है, ओहो भाई, आज तो मतलब प्रॉपर एकदम जेरार्ड की आत्मा एकदम साक्षात Szoboszlai के परफॉर्मेंस में. The engine that guy has, I keep talking about it. भाई मतलब क्या बंदा ने खेला है. And हम लोग ही बात करते थे जब सीजन शुरू हुआ था, that Szoboszlai is like ठीक है, ट्राई करता रहता है, भागता रहता है, बट वो possess नहीं है बंदे में, वो दिखता नहीं है. कि हमको क्या ही पता था उसका मतलब दिल कहीं और था, कंसंट्रेशन कहीं और ही लगा हुआ था बेचारे अभी वो सब सॉर्ट हो गया है. Now he is back to being in the game. Yeah. See, I'm very happy about today's performance, because there was not just one man जिस पे पूरा dependency था to get us goals, which is Mohamed Salah, and has been that, because before this match 71% of goals involvement have been because of Mohamed Salah, and has been of Mohamed Salah. But today, like पहले 2 goals जो हमने करे हैं, उसमें involvement तुम देखो, Diaz ने पहले गोल किया. I was so happy with that Trent cross. Like कितने टाइम बाद हमने वो Trent का cross linking up with. Since we are speaking about Trent, defensively Trent was very astute. आज मतलब Son दिखा ही नहीं पूरे गेम में. कहीं पे भी मतलब आई वाज थिंकिंग कि हाँ, अगर जैसे कोई मेरे को अगर फुल टाइम में स्कोर कार्ड दिखाए कि 6-3 हुआ है, आई वुड थिंक दैट उसमें 2 असिस्ट मिनिमम तो सॉन के होने ही थे, अगर 3 गोल वो लोग मार रहे हैं तो. बट आज सॉन दिखा ही नहीं, नॉट एट ऑल. आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड गेम ऑफ मेनी प्लेयर्स टुडे, एंड आई थिंक दिस वाज वेल डिजर्व्ड, एंड वी नीडेड दिस विन, बिकॉज पिछले 2 मैचेस में जो बेफालतू के ह्यूमन एरर्स की वजह से अपना जो 2 मैचेस गए हैं न्यूकासल में, आज भी ह्यूमन एरर था. कंप्लेसेंसी 5-1 जाने के बाद, मतलब यू डू नॉट कि मतलब यू डू नॉट गिव एनीबॉडी. इस साल के प्रीमियर लीग में जिस तरह के फिक्सचर्स रह रहे हैं, जिस तरह के परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, you do not get to be complacent until and unless you are mathematically safe, because you are playing that well.
and there's a new manager and all of you have started playing so well and linking up with each other. There is hope and I understand that as fans it is too much to expect कि एक नए मैनेजर के आते ही things will just start working out, हम लोग तो भाई एक्सपेक्टेशन अपना सेटल करके ही बनाए हुए थे कि टॉप 4 अगर आ गए तो फिर बहुत बढ़िया, भगवान तुम लोग अभी सपना दिखाए हो तो फिर अभी उसको पूरा करो भाई कितनी बार सपना दिखा के ऐसे में लटका दोगे यार. मतलब आफ्टर एवरी लिवरपूल सीजन, लाइक आफ्टर एवरी प्रीमियर लीग सीजन, इट्स मी who feels like I need a break because हम हमेशा वहां तक पहुंच जाते हैं. कभी it's quadruple we are winning, कभी it's by 1 point we are losing, कभी it's Champions League final we reach and we end up losing. मतलब कहाँ तक पहुंच के we just see the success there and just come back by just looking at it. So इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है that I myself start feeling exhausted after watching a Liverpool season because it has always been with such high tempo and expectations, hopes, and then it just comes crashing down. That is one thing I do not want after having such a good season. So the good thing is Chelsea dropped points as well. Arsenal won with a very good score line, which is fine. But then the good thing is that Chelsea dropped points. Man City के बारे में बात करें ना करें, I do not know. I do not know if they're planning to make a comeback. If they do, it will be very scary, but right now we are not seeing that on the table. But let's talk about the match. Which was your favorite goal? We have had like 6 to choose from. Which was your favorite? मेरा favorite goal, like just based on the build up play जो इतना सही रहा था, I would say that Salah first goal जो था, like every single pass up until the goal that was scored, the fourth goal, हाँ जो मतलब सोबोस्लाई मारा था and वो डिफेंड हो गया था, बट साला फाउंड हिमसेल्फ इन अ वेरी फेवरेबल पोजीशन. लाइक वहां तक कि मतलब सोबोस्लाई तक बॉल पहुंचने के पहले तक दैट गैक्पो का पास जो जहाँ पे निकाल के दिया था डियाज को, लाइक एवरी सिंगल पास दैट लेड अप टू दैट गोल, आई फेल्ट लाइक कि भाई this is like proper transition football. Like a lot of other goals that we scored also during the game, obviously all of those goals were very good. Soboslai का पहला goal भी was very nice. For me, if I have to talk about my favorite goal, I think it has to be the 6th goal. Now, why am I saying that? I loved all the goals. I loved the Salah goals, and I always do the celebration. But why the 6th goal specifically? Because if you watch that goal, भाई मतलब तुम देखो उस टाइम पे डियाज का पोजीशनिंग वो कहाँ से टच करके, मतलब हाफ लाइन के भी पीछे है वो बंदा. ही रिसीव्स द बॉल, आई डोंट नो फ्रॉम होम, वो बॉल पास करता है जोटा को, वो हाफ लाइन के पीछे है, वहाँ से वो रन ले रहा है. रन लेने के बाद ही गोज टू द लेफ्ट से राइट विंग जाता है, वहाँ जाके साला को बॉल जाता है, ही मेक्स दैट टाइमली रन जो साला उसको बना के देता है, एंड हिज क्लिनिकल फिनिश, आई थिंक इट वाज वेरी गुड एंड सो इंटेलिजेंट फ्रॉम लुइस डियाज इफ यू थिंक अबाउट इट. बिकॉज इतने टाइम मुझे लगा भाई ये बंदा ऑफसाइड तो नहीं है, कि जब ट्रेंट ने बना के दिया तब भी, जब साला ने बना के दिया तब भी, एंड देयर वर 2-3 मोर मोमेंट्स इन द गेम जब लगा कि भाई ये बंदा ऑफसाइड तो नहीं है, बट कभी भी नहीं. इतना टाइमली उसका रन रहता है. एंड हैड इट बीन नूनियज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम नॉट शेडिंग ऑन नूनियज राइट नाउ, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट वो बंदा ऑफसाइड हो जाता है. सो दिस इज वेरी लिटिल क्वालिटी दैट यू सी. नहीं वो तो सही है, मतलब वी गेट टू सी डियाज a lot of the time in a lot of the matches कि डियाज को बॉल मिलता है वो बहुत दूर तक भाग के लेके जाता है, बिकॉज ही टाइम्स खुद ही बना के लेके जाता है वहां पे. हाँ उसका मतलब फाइनल थर्ड में वी डू नॉट गेट टू सी हिम डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, लाइक डिसीजन मेकिंग उसका क्वेश्चनेबल रहता है, किसको पास दे, कहाँ पे मारे क्या नहीं मारे, फाइनल थर्ड में उसका रहता है. बट द टाइमिंग ऑफ हिज रन, लाइक ही सीज इट, उसका जो विजन रहता है एवरी टाइम कि मैं अभी भागूंगा, मतलब इस एंगल में भागूंगा, कहाँ तक भागना है, किसको काट के कहाँ तक निकालना है, वो एकदम लास्ट मोमेंट तक वो बॉल कैरी करके लेके जाना, लाइक ही हैज दैट इंटेलिजेंस. दैट इज वेरी गुड एंड आई थिंक वो बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर्स में होती है, हर किसी में वो मिलेगा ही नहीं. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सीन इतने ब्रिलियंट प्लेयर्स भी ऑफसाइड ट्रैप में पकड़े जाते हैं, बट नॉट लुइस डियाज. एंड बिकॉज ऑफ हिम, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट गोल वी गॉट बैक in the game, because वो भाई गोल्स करने लग गए थे. 1-5 से 3-5 हो गया था. अगर ये 4-5 हो जाता, टॉटनहम would have like run away with it and they would have become legends. Like लिवरपूल ने इतना गंदा लीड गवा दिया, तो वो जो एक गोल था वो थोड़ा स्टेबिलिटी दिया टीम को. तो आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वुड बी माय फेवरेट गोल. नाउ मैन ऑफ द मैच. मैन ऑफ द मैच, लाइक So it would be so easy to just say Salah, because obviously Salah had that kind of a performance He's today. Man of every match. हाँ, but
to make it थोड़ा interesting in the sense like कि अगर obvious choice की तरफ ना जाए then Soboslai भाई extraordinary performance from Soboslai भाई मेरे मजा आ गया आज मतलब मजा आ गया. One more performer who goes under the radar because he performs so well in every game is Gravenberch. तो Gravenberch का performance, like I'm telling you, किन के बारे में बात ना करें, because when our players give us such days, it's like, you want to have all of them as the best players, but if I have to choose one, like it's again very difficult, but I would really say it's going to be McAllister for me, even though I know that he was caught for again, the first goal. This is because we are not going with the obvious choice. We are not going with the obvious. Otherwise, Diaz was so good. I was so impressed with him. And today, only in the starting of the match, I was talking to him about how he has to turn up, man. He can't be like, ठीक है मैं बाकी चीज अच्छा कर रहा है, लेकिन गोल कोई और कर देगा नहीं. He has to turn up. And the, the best moment of the game of the match was the celebration of Diaz and Trent. I loved that. That was so good. मतलब अच्छे सेलिब्रेशन जब होते हैं बहुत अच्छा लगता है देख के. So yeah, this is like we've talked about man of the match. Mine is क्या बोला था मैंने? McAllister. There were so many players. I'm like shit. What did I say? Yeah, so mine is McAllister. But don't forget to comment down below who is your man of the match and which was your favorite goal. So yeah. I'm so happy that we have won from Tottenham, but we have to face them again in Carabao Cup. So we have drawn against them. So this is going to be a good semi-finals because I don't think that is going to be a match such as this. It's going to be a very different one. One thing that I want to mention here is about Arne Slot, that I think that he does not do rotations well. I think that he's relying on the set of players that we have too much, which is good. We have to rely on them. But you remember the Konate injury we had against Madrid. So that injury could have been avoided अगर हम substitute करते. But I understand why did we do that. That was a very freak injury. Like तुम वैसे थोड़ी count कर सकते हो कि somebody like what Endrick did. Yeah. कि वो आके ऐसे deliberately ये करेगा. वो चाहे वहाँ पे कोनाटे ना होता. नहीं. तो वो वर्जिल पे करता. Like वो deliberately ही वो करके आया था कि उसको वो दिखाना था कि भाई I'm the big man on the pitch दिखाने के लिए. Listen, I understand all of that, but today we were like the scoreline was 1-5. Okay, I thought that maybe at 60th or 65th minute we will see the services of Endo because he performed very well when it comes to this Carabao Cup against Southampton. I know that there is a lot of difference in the quality between Southampton and Tottenham, but still like. If we will not give him time right now, after we are like the scoreline is 1-5, तो हम कब देंगे? मुझे वो नहीं समझ में आता. तो because I think that I'm so sorry, but Gravenberch को अगर एक और येलो कार्ड आज मिल जाता तो नेक्स्ट मैच में he would not have been available. तो I think to avoid those circumstances to happen, हमको थोड़ा rotation करना ज़रूरी है so that these players also start to get game time and more experience of playing in Premier League against teams like these. तो मुझे वो थोड़ा लगा कि I should have mentioned it, but I'm not saying anything against the man भाई. इसमें मतलब मेरे 3 पॉइंट्स मेरे बनते हैं. ये पहला चीज़ है कि वी आर ऑपरेटिंग वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक जो स्लॉट के पास है. तो मे बी ही नोज समथिंग अबाउट देयर फिटनेस लेवल्स. लाइक ही नोज कि ही कैन डू he can depend on these players. Like उनका फिटनेस ड्रॉप नहीं होगा बिकॉज जैसे हम लोग अभी साला को लेके लेकिन साला को तुम बिठाओ या फिर खिलाओ. वी डू नॉट वरी एट ऑल अबाउट हिज फिटनेस. बोलना नहीं चाहिए कि वी शुड नॉट से दैट, बट वी हैव दैट ट्रस्ट ऑन हिम. तो मे बी सिंस स्लॉट इज वर्किंग विद दीज प्लेयर्स डे इन डे आउट, ही सीज देयर फिटनेस लेवल, सो ही मे फील, क्योंकि वो मैकएलिस्टर को बिठाता है, वो रेस्ट करवाता है मैकएलिस्टर को. वो चाहे सोबोस्लाई और ग्रेवेनबर्ग को वो नहीं बिठाता. मे बी ही सीज समथिंग इन देम लाइक ही कैन डू, और ही सीज समथिंग दैट द अदर्स आर मिसिंग जो उनके पोजीशन पे खेलेंगे. तो शायद इस वजह से मैच खराब ना करे कि वो गैप बना पाए. दूसरी चीज जो नॉट वेरी रिलेटेड टू दिस मे बी, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लाइक अबाउट स्लॉट कमिंग इन एट दिस पॉइंट ऑफ लिवरपूल्स जर्नी इज दैट मेरे को पता है कि स्कोर लाइन 6-3 है एंड ही वुड बी वेरी फ्यूरियस विद द प्लेयर्स दैट वी कंसिडर 3 goals.
Like I can understand, like हम लोग तो मस्त अभी जाके सो जाएंगे, but he is going to lose his head. And he is going to like really give them a dressing down कि why did you stop running, what did you feel. And this is the winner's mentality, because you know this is what Mohamed Salah also said in the post match interview, that defensively we have to be better, because you can't see when the scoreline is 1-5 at that point of time, it is the defenders pura thing that they have to be very good at that point of time, because forwards attackers have done their attackers अपना काम कर चुके they have done their work. Now it's you who has to like turn up. The forwards can help you, maybe counter attack में they can do something or the other, but more than that I think nothing can be expected. तो उस time पे या तो help in the defense, or defenders have to be their absolute best at that point of time. I think we have फालतू में conceded those 3 goals only. जो पहला गोल था मैकेलिस्टर, वो बहुत ही मतलब रिस्की पास दे दिया मैकेलिस्टर को, बहुत तेज पास था, मैकेलिस्टर could not handle the ball, और कुलुसेव्स्की ने वहाँ से निकाल दिया बॉल, और मेडिसन ने बहुत अच्छा फिनिश किया. सो एंड कुलुसेव्स्की का दूसरा गोल भी जो हुआ भाई, किस तरीके से बॉल बना के खुद ही गोल किया उसने. आई थिंक कुलुसेव्स्की वाज वेरी गुड. कुलुसेव्स्की हैज दैट थिंग जो ना मतलब बहुत कम प्लेयर्स में मिलता है, लाइक यू आर लूजिंग with such a scoreline ki 5-1, but he did not let his performance level drop. Like true. You get to see these things in very small number of players, like that pride कि मेरे को इतना तो perform करना ही है, चाहे मेरा टीम जीत रहा हो, खराब हो रहा हो, I have my own personal standards. I'm going to perform at that level. But after seeing today's match, I think defensively Tottenham was horrible. Like literally horrible, because I know Liverpool. I know that how much we try to get goals. It's not like we don't get goals from open play. We do, but we do try. But आज ऐसे हो रहा था कि anything we were touching was turning into goal. Like you know, that is what was happening. So seriously, Fraser was poor, because कुछ 10th 11th मिनट पे ही उसने पास किया मोहम्मद साला को. लाइक मोहम्मद साला भी मुझे लगता है उस टाइम पे he was also like did he really do that, like उसने उस टाइम पे जब शॉट लिया, of course that did not turn into a goal, but that is like very bad. The goalkeeping and the defense right now, I understand injuries की वजह से Tottenham is झुलसोइंग right now, but I think that they can like, make a attacking wise, like they cannot do any better at this stage. Very like good. I feel like and Postecoglou जितना कर सकता है उसने किया हुआ है, but defensively a lot of improvement has to be done by Tottenham, because again like you said, even I know what Liverpool is a council level पे, and obviously they had a very good name, yet even then जैसे तुम फुलम के अगेंस्ट हो, तुम क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट खेलो, तुम ऐसे किसी भी we are no Man City, like the Man City prime who were winning leagues after leagues, we are not that team. We will commit mistakes, we are human beings, like we are not robots honestly. But yeah, that is what was happening in the match today. So we have had a very good Sunday evening. We will have a good like office days after this. अगर ये मैच गलत चला जाता, पूरा ऑफिस का हफ्ता खराब हो जाता. So yeah, I am not gonna have any dessert in this week, which will be a very big challenge for me. So because I have put on a lot of weight, and desserts is one of the things, because I love desserts, and Kolkata has very good mishtis and desserts. So yeah, that is what is ruining me right now. So yeah, that is the video guys. Don't forget to comment down below how did you like it. I hope the sound and the things are okay. I'll have to check while I'll be editing it, because मेरे आज live में बहुत issues हुआ. No matter what you buy, no matter how much you plan, मतलब मैं आज 7 बजे बैठ गई थी मैं प्लान करने की, मैसेज अगर ये लाइव करूँगी, देखो तब भी इश्यूज हुआ. So this is part and parcel of creating content. But yeah, thank you so much for supporting, and please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.